Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 15 of differential geometry. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेने ऑपरेटर्स किया था फॉर एन आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व। उसके बाद हमने जो फार्मूलाज डिराइव किए थे आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व्स के लिए, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था इन कंप्यूटिंग द फ्रेने फ्रेम, टॉर्शन, कर्वेचर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर। ये तमाम चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी फॉर एन आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी अगर कर्व गिवन हो तो हम उसका एक ख़ास एस्पेक्ट लेके एक और कर्व डिफाइन कर सकते हैं, और जो नई कर्व बनेगी ये कर्व की जो ओरिजिनल कर्व है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिपिक्ट करेगी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल आप कर्वेचर ले लें, वो ज़्यादा आप उसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं इफ़ यू डिफाइन ए न्यू कर्व just emphasizing few aspects of the geometry of the curve. So for example हमने spherical image define किया था एक curve का, और फिर ये देखा था कि कैसे हम understand कर सकते हैं for example curvature को, और जो unit tangent vector है वो कैसे behave कर रहा है उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से understand कर सकते हैं after taking this spherical image. आज के लेक्चर में हम फ्रेने फ्रेम से रिलेटेड सिलेंड्रिकल हेलिक्स करेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे फ्रेने फ्रेम और उससे रिलेटेड जो मशीनरी है आपके पास, टॉर्शन, कर्वेचर एंड अदर थिंग्स, ये कैसे बता सकती हैं किसी भी कर्व के बारे में। सो बेसिकली यूँ समझ लें कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन होगी, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी हमारे पास, कि हम सिर्फ और सिर्फ बाय जस्ट लुकिंग एट टॉर्शन एंड कर्वेचर हम ये बता सकते हैं कि ये कर्व किस किस्म की होगी, और एग्जैक्टली उसकी फॉर्म भी बता सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट लेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव से। कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या है, इनका यूज़ क्या है, और इनको कंप्यूट कैसे करना है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उनको देखेंगे, और यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे आज पे। स्टार्ट लेते हैं जी सिलेंड्रिकल हेलिक्स से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फ्रेने फ्रेम में आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, टॉर्शन है, कर्वेचर है। कोई भी कर्व गिवन हो आप ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये भी देखा था कि कैसे ये जो फ्रेने फ्रेम है या फ्रेने ऑपरेटर्स है ये कर्व की ज्योमेट्री को कैसे बता सकता है। तो अब इस सेक्शन में हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व की, एंड दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल हेलिक्स। और हम ये देखेंगे कि बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉर्शन एंड कर्वेचर यू कैन एग्जैक्टली टेल दैट दिस इज ए सिलेंड्रिकल हेलिक्स। आपके पास कर्व नहीं गिवन, कोई आपको ये बताता है कि मेरे पास एक ऐसी कर्व है जिसका ये टॉर्शन है और ये कर्वेचर है, तो आप बता सकते हैं कि whether this curve is a cylindrical helix or not. So start लेते हैं by first defining precisely what does a cylindrical helix mean. एक irregular curve, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि we are just considering the regular curves, वो तमाम की तमाम curves जिसके लिए r such that r prime of t is not equal to 0. So ये तमाम के तमाम curves हैं. This is a cylindrical helix provided that the unit tangent vector of alpha has a constant angle theta with some fixed unit vector u. So that is t dot u is equal to cosine theta. So this theta is fixed. So what does it mean geometrically? So just look at this picture. ये जो red line है, this is the curve. And this is cylindrical helix because this vector u, so all of these are vector u, हमने इनको translate किया, so all of these vector u's, so they have a constant fixed angle, so that's what the definition says, has a constant angle theta with some fixed unit vector u. So what is that constant angle theta? There is this angle theta, and this angle is constant, and the tangent vector at any point, so let's say this is the tangent vector,
this is the tangent vector. So all of these tangent vectors, so they have constant angle with this unit vector u. So that's how we define. For example, this is one of the example of unit. So for example, this is one of the example of cylindrical helix. So in this case, this is also true that tangent at any point have constant angle with a unit vector. और इस केस में आपके पास जो unit vector आएगा वो कुछ ये आएगा. So इसमें आप देख सकते हैं कि it has a constant angle with each and every unit vector, unit tangent vector. Similarly, you can take instead of taking this right cylinder, you can also take this oblique cylinder, and this oblique cylinder has a cylindrical helix on it. So there are many kinds of cylindrical helices. Next, let's say we have a unit speed curve. क्योंकि हमारे पास अगर unit speed curve नहीं है, we know that we can reparameterize the curve into a unit speed curve. So we will always assume that it's a unit speed curve. And if it's a cylindrical helix, then consider this function h of s is equal to beta of s minus beta of 0 dot u. So what does this number mean? So we know that if I have a vector, let's say alpha, and if I have a vector beta, then what is alpha dot beta? So let's say this beta is a unit vector. Okay, so what is alpha dot beta? So let's apply the definition first. So alpha dot beta is equal to norm of alpha, norm of beta, and cosine theta, where theta is the angle between them. So norm of beta is 1, so which means this is norm of alpha cosine theta. Now what is norm of alpha cosine theta? So what is norm of alpha? This is the length of this vector. So the length of this vector is norm of alpha. And norm of beta is 1 because it's a unit vector. So what is this expression? Norm of alpha cosine theta. It's basically this length. So the component of alpha in the direction of beta. So this is theta. So this is the component of alpha in the direction of beta. So if I take this dot product now in h of s, so and u is the unit vector by definition. So what does it mean? It's basically the component of beta of s minus beta of 0 in the direction of u. So what does it mean? So let's say this is beta of 0, which is in a plane. So let's say this plane is fixed, and why we are fixing this plane? Just to see that what is the height of any point at value of some parameter s. So beta of s minus beta of 0 is basically is a number, is a vector in fact. So let's say it is this vector, and if you take the dot product of, let's say, this vector, I'm not mentioning any direction because it's not important in this case. So एक line है मेरे पास, उसका मैंने component find out करना है in the direction of h. So the component, just like we calculated the component of alpha in the direction of beta, so the component of beta of s minus beta of 0 in the direction of h will in fact give me the height of this point beta of s, and this plane is fixed, it is containing beta of 0. So with reference to the point beta of 0, this will give me
the height of any point S. Okay, so let's calculate the derivative of this height function just to see that how the height is increasing or decreasing or changing. So height function का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ये देखने के लिए कि ये हाइट कैसे वेरी कर रही है. सो बीटा ऑफ 0 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा और वंस अगेन u का डेरिवेटिव 0. सो बेसिकली आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. सो दिस इज इक्वल टू दिस. एंड व्हाट इज बीटा प्राइम ऑफ s? सो इट्स अ यूनिट स्पीड कर्व, रिमेंबर. और अगर ये यूनिट स्पीड कर्व है देन बीटा प्राइम ऑफ s इज द टेंजेंट वेक्टर. And we also know that this is equal to cosine theta. So what does this mean? So it means that the height is changing at a constant rate because the rate of change of height is a constant number. So height is increasing at a constant rate. So this is one of the observations. Now what is a good way to see a cylindrical helix? And the good way is to use the Frenet operators. And how to use that Frenet operators? So this theorem states that a regular curve alpha with curvature greater than 0, and remember we are ignoring the case where curvature is equal to 0 because it is a straight line, and it is a cylindrical helix if and only if the ratio tau over n is constant. So this theorem is important in a way that सबसे पहली बात यह है कि ये बताता है आपको कि हाउ इम्पोर्टेंट द फ्रेने ऑपरेटर्स इज, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ टॉर्शन और कर्वेचर को यूज करके तमाम की तमाम कर्व के बारे में बता दिया है कि दैट दिस इज अ सिलिंड्रिकल हेलिक्स. सेकेंडली आपको एक अच्छा वे बता रहा है हाउ टू डिफाइन ए सिलिंड्रिकल हेलिक्स. सो बेसिकली एक काइंड ऑफ आपने क्लासिफिकेशन कर दी है तमाम की तमाम कर्व्स जिनके लिए रेशियो ऑफ टॉर्शन एंड कर्वेचर इज कांस्टेंट, वो तमाम की तमाम हमारे पास सिलिंड्रिकल हेलिसेस हैं. सो लेट्स कंक्लूड विद this remarks. Basically let's go back 2 or 3 lectures जब हमने फ्रेने फ्रेम को डिफाइन किया, उसके बाद हमने फ्रेने फार्मूलाज को डिफाइन किया, उसके बाद हमने कर्वेचर और टॉर्शन डिफाइन किए थे यूनिट स्पीड कर्व्स के लिए. उसके बाद हमने देखा था कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व. नेक्स्ट वी बेसिकली जनरलाइज्ड दोज थिंग्स टू आर्बिट्ररी स्पीड कर्व्स, the same formulas, और हमने देखा था कि it is very easy to generalize them and it is very easy to see them, or but the outcome is very important. Outcome is very non-trivial in a way that it will tell us the geometry of the curves in a very good way. So just like the एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंड्रिकल हेलिक्स, जहां हमने ये बता दिया है कि टॉर्शन और कर्वेचर का अगर हमारे पास जो रेशियो है वो कांस्टेंट है देन इट इज अ सिलेंड्रिकल हेलिक्स. सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व्स. सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार in terms of Frenet operators, what properties of the curves can be easily understood. So the first thing is if the curvature is 0, if and only if it's a straight line. So given any curve, if the curvature of the curve is 0, then it is a straight line. Similarly, हमने ये भी प्रूव किया था कि if the torsion of the curve is 0, then the curve has to be a planar curve. ये एक प्लेन के ऊपर लाई करेगी. It will not be in 3-dimensional space. So 3-dimensional space में आपके पास कर्व है. If the torsion of the curve is 0, तो 3-dimensional स्पेस में आपके पास एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर वो कर्व तमाम की तमाम लाई करेगी. सिमिलरली अगर हमारे पास कर्वेचर कांस्टेंट है और टॉर्शन 0 है, सो टॉर्शन 0 हमने देखा है इट्स ए प्लेनर कर्व, सो इट इज सम कर्व लाइंग इन ए प्लेन. सेकेंडली अगर हमारे पास कर्वेचर कांस्टेंट है और हमने ये देखा था कि दिस इज ओनली पॉसिबल if the curve is basically part of a circle.
सो बेसिकली इट कैन बी एंटायर सर्कल, इट कैन बी सम पार्ट ऑफ द सर्कल। सो ये चीज़ भी हमने प्रूव की थी। उसके बाद हमने देखा कि अगर कर्वेचर कांस्टेंट है और टाउ कांस्टेंट है, अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, देन इट्स ए सर्कुलर हेलिक्स। सो व्हाट इज अ सर्कुलर हेलिक्स? Circular helix basically is a helix which lies on a right cylinder. So it's something like this. So it is lying on a circular right cylinder. So if these are constant, so basically we are just combining the above results. So if this holds, then it is a circular helix. और जो लास्ट थ्योरम हमने किया था, जिसका हम प्रूफ इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है, अगर रेशियो जो है वो टॉर्शन और कर्वेचर की कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, क्योंकि अगर जीरो होगी तो आप खुद से देख सकते हैं कि इसका मतलब है टॉर्शन जीरो होगा, और अगर टॉर्शन जीरो है देन it is a planar curve and it is not a helix. So if it is non-zero and constant, then it is a cylindrical helix. So this is just a very short view of how good can this Frane apparatus be. कितने अच्छे तरीके से ये आपको ज्योमेट्री ऑफ द कर्व्स के बारे में बताता है। Now let's start with covariant derivatives. वेक्टर फील्ड की हमने डेफिनेशन की हुई है। व्हाट इज ए वेक्टर फील्ड? ए वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन विच असाइंस ए वेक्टर टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ R3। सो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, corresponding to each and every point of R3 there is a vector, in fact a tangent vector at that point. इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको एरो हेड नहीं नज़र आ रहे, तो बेसिकली देर आर एरो हेड्स, लेकिन वो जस्ट स्केच नहीं किए गए, अदरवाइज इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ भी एरोज हैं आपके, यहाँ भी एरोज हैं आपके, हर जगह पे एरोज हैं, और इन अदर वर्ड्स हर पॉइंट पे एक आपके पास टेंजेंट वेक्टर आ रहा है एट दैट पॉइंट, लेकिन उसको इस पिक्चर में स्केच नहीं किया गया बिकॉज इट विल बी देन वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द पिक्चर. So we know what is a vector field, we know how to visualize a vector field. Now the point is we can see that कि कोई एरो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एरो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, हर एरो की अपनी एक डायरेक्शन बनी हुई है, but now we need to understand the behavior of these arrows or the behavior of these tangent vectors. Not entirely but some aspect of it. इसका कुछ पार्ट हम समझना चाह रहे हैं जितना पॉसिबल है कि इन एरोज की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है. सो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कैलकुलस में फंक्शन लिया था y = f(x). तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर एक क्वांटिटी y जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. And then we understood these quantities and we calculated them, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूल्स भी हैं कैलकुलेट करने के, डिफ्रेंशिएट करने के. इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा बिकॉज what was the main aim? We want to understand the rate of change of one quantity with respect to the other quantity. So whenever there is a variation, we always want to understand the rate of change. So इस पिक्चर में let's say एक वेक्टर फील्ड बना हुआ है, we want to understand the rate of change of this vector field. Let's say किसी भी पॉइंट पे let's choose this point, let's say this is the point P. इस पॉइंट P पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करूँ तो इन एरोज में क्या चेंज आएगी. सो फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ, सो इस डायरेक्शन में मूव करके इन एरोज में क्या चेंज आएगी. सो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, लेकिन हमने डायरेक्शन भी दे दिया क्योंकि देयर आर मैनी डायरेक्शंस, तो हमने एक डायरेक्शन भी दे दी है. हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन दिस डायरेक्शन. सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन दिस थिंग मैथमेटिकली. एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं हम W इन R3,
और VP हम लेते हैं एक टेंजेंट वेक्टर टू R3. So what is this VP? Let's go back to the picture. So this vector is VP. So इस डायरेक्शन में this is the tangent vector to R3 at point P. This VP is tangent vector to R3 at point P. इस डायरेक्शन में हम इस वेक्टर फील्ड W का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं at point P. So VP is a tangent vector to R3 at point P. The covariant derivative, so इस डेरिवेटिव को हम कह रहे हैं, इस रेट ऑफ चेंज को जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं covariant derivative of the vector field. And this covariant derivative of W with respect to VP, the tangent vector at point P, is the tangent vector this. Okay, so what is W of P plus TV? Now what is P plus TV? So basically if you have a point in R3 and if you have a vector at point P, then we have seen that there is a line passing through point P and parallel to the vector V. So this line is unique. So L is unique line. So उस line की बात हो रही है यहाँ पे. So P plus TV. And the value of the vector field at this line P, इसका क्या मतलब है? ये हमने already इस किस्म का concept एक देखा हुआ है when we calculated the vector field at a curve. So for example कोई सी भी एक space curve है, कर्व के हर पॉइंट पे मेरे पास अगर एक वेक्टर हो, उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप ले सकते हैं टेंजेंट वेक्टर फील्ड. सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड. व्हाट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड? इट इज अ वेक्टर फील्ड. इट विल गिव मी ए वेक्टर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, बट नॉट टू R3, टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व. सो कर्व के हर पॉइंट पे मेरे पास एक वेक्टर आ रहा. सो दैट्स वाई दिस इज ए वेक्टर फील्ड एट द पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व. सो कर्व के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर आ रहा है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर फील्ड एट द कर्व. सो कर्व के हर पॉइंट पे एक वेक्टर है. नाउ व्हाट इज W of P plus TV? This means that we have restricted the vector field to basically this line. So for example we will have vector field like this. So the vectors could be very changing. इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज आ रही हो हर पॉइंट पे वेक्टर्स में. So this is W on this line. So line के हर पॉइंट पे एक वेक्टर है which is tangent vector to R3 at the points of the line. उसका हमने डेरिवेटिव लेना है अपने. Now what is W of P plus TV? ये हमने बता दिया. उसका डेरिवेटिव लेंगे. It is a vector field and we know how to take derivative of a vector field. हमने ये देखा था कि कोई सा भी हमारे पास अगर vector field है W, then we can write it down as W1 U1 plus W2 U2 plus W3 U3. So ये जो components हैं, these are real valued functions on R3. So all of these WI's are functions from R3 to R. And then what is W prime? So W prime is equal to W1 prime U1 plus W2 prime U2 plus W3 prime U3. और ये जो primes हैं they are with respect to the variable of the curve. So for example if it is a line, then in this case हमारे पास जो variable है वो t है. So it will be a function of t. So basically इस केस में हम derivative ले रहे होंगे with respect to t. So this is the derivative of W1 with respect to t, derivative of W2 with respect to t and derivative of W3 with respect to t. उसके बाद आप इसको इवेल्युएट कर लेंगे एट पॉइंट 0, और जब आप t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ
दिस वेक्टर फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे एट द एंड, सो T इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, so this will be rate of change at point P but in the direction of V. Okay, so what is this notation? So this notation or this symbol is called nebula. So it's a very old word, it's a very ancient word, और इसका जो original meaning है, literal meaning है उसका, ये harp है, ये एक musical instrument है, harp. So ये इसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है. So this is called nebula. So as we have discussed, this covariant derivative of the vector field in the direction of V at point P measures the initial rate of change of W of P as P moves in the direction of V. So what is W of P? So as we have discussed that a vector field is a function that assigns a vector to each and every point. So W of P is this vector. So this is W of P and this is W vector field. So this is W of P, and if we move in the direction of V, if we move in this direction, then it will give me, the covariant derivative will give me the rate of change. कि जैसे ही हम P से इस डायरेक्शन V में मूव करेंगे तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा इस वेक्टर फील्ड का. So that's the definition. Now one may ask कि हम इस किस्म की चीज़ें क्यों डिफाइन कर सकते हैं. So one of the very important application of this is to understand the weather. आपका जो मौसम है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग कोवेरिएंट डेरिवेटिव. सो फॉर एग्जांपल वेदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो उन चीज़ों में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से विंड को. आप टेम्परेचर भी डिस्कस कर सकते हैं, आप और चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, सनलाइट भी डिस्कस कर सकते हैं. तो हम सिर्फ एट द मोमेंट ले रहे हैं विंड को. सो विंड इज़ अ वेक्टर फील्ड बिकॉज एट एनी पॉइंट आपके पास ना सिर्फ विंड की डायरेक्शन होती है बल्कि उसकी जो स्पीड होती है और उसकी जो जिस स्पीड से वो विंड ब्लो कर रही है, चल रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है. सो बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस वी कैन हैव ए वेक्टर. उसका जो डायरेक्शन है वो बता रही है कि विंड किस डायरेक्शन में मूव करेगी और उसकी जो लेंथ है वो उसकी स्पीड बता रही है. सो वी हैव वेक्टर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस, and then by definition this is a vector field and we can call it wind vector field because it is giving me a vector at each and every point of the space. Now of course if we have this wind vector field then it is very crucial, बहुत important है हमारे लिए हम ये जाने कि ये किस स्पीड से, अगर किसी एक डायरेक्शन में, लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये इस डायरेक्शन में, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा. और ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में अब मूव करेगी. सो अगर रेट ऑफ चेंज इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये इस डायरेक्शन में विंड, ये तमाम का तमाम जो सर्कल है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. और फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि इस किसी एक और पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या रेट ऑफ चेंज है. सिमिलरली द रेट्स ऑफ चेंज of this vector field at a point in a certain direction, they are important to understand the behavior of the wind and of course eventually to understand the weather. And we do it by calculating the covariant derivative of this wind vector field. In general आप पूरी जो planet Earth है उसमें ये vector field define कर सकते हैं, the wind vector field, और आपको हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर मिलेगा जिसकी जो डायरेक्शन है वो विंड की डायरेक्शन बता रही है और उसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो आपको स्पीड बता रही है विंड की. सो दिस इज द विंड वेक्टर फील्ड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैलकुलेट करें किसी भी पॉइंट पे एक खास डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज.
and it will give us how the wind is going to change in that certain direction. Now how to calculate this rate of change? So we have seen that if W is a vector field, और ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किसी भी वेक्टर फील्ड को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड. नेचुरल फ्रेम फील्ड क्या है? U1, U2 और U3. इसमें जो U3 का कंपोनेंट है वो 0 है. सो कोई भी वेक्टर फील्ड हो हम उसको इस वे में लिख सकते हैं. अब हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ V. सो अगर हम डेफिनेशन देखें, सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. सो इट्स बेसिकली P प्लस TV प्राइम एट 0. सो ये चीज़ हम कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट P प्लस TV. So P plus TV is equal to, so P is 210 plus T and V is minus 102, and so this is equal to 2 minus T, 1 and 2T. This and now this is P plus TV. Now what is the W of P plus TV? So basically आपने कैलकुलेट करना है वेक्टर फील्ड को एट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन. और पॉइंट्स ऑफ द लाइन किस फॉर्म के हैं? इसका जो x कोऑर्डिनेट है 2 माइनस t है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, उसका जो z कोऑर्डिनेट है वो 2t है, where t is the parameter. So basically we can see that this is the point P, this is the vector V, and then this line is basically each and every point, or let's say an arbitrary point of the line is 2 minus T, 1, 2T. और किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमने वेक्टर फील्ड W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? x की जगह आप 2 minus t, y की जगह 1 और z की जगह 2t पुट कर देंगे. So this is basically equal to 2 minus t square u1 plus y is 1 and z is 2t and u2. So this is basically equal to 2 minus t square u1 plus 2t u2. So this is W of P plus TV, value of the vector field at points of the line, and t is the parameter. जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करेंगे आपके पास पॉइंट्स ऑन द लाइन आते चले जाएंगे. t की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास जो t इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है लाइन के ऊपर, उसके ऊपर आपकी वेक्टर फील्ड की वैल्यू आएगी. t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास जो पॉइंट P है उसके ऊपर जो वेक्टर फील्ड की वैल्यू है W की वो आ जाएगी. अप टू सो ऑन लाइन के पॉइंट्स के ऊपर. दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वेक्टर फील्ड. अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इसका कैसे डेरिवेटिव लेते हैं. बेसिकली इसके x कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t इज द वेरिएबल नाउ. सो 2 माइनस t इंटू माइनस 1 u1 प्लस 2 u2. t का डेरिवेटिव 1 और माइनस t का डेरिवेटिव -1. यहाँ आ गया हमारे पास. नाउ व्हाट इज p plus tv prime in a simple way? This is -2 minus t u1 plus 2 u2. Now by definition of the covariant derivative we need to calculate this expression. So let's put t is equal to 0 in this expression. So अगर मैं t is equal to 0 यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास -4 आ जाएगा, u1 वैसे ही, और इसमें t का कोई पार्ट नहीं है. So this is 2u2. So this is the covariant derivative of the vector field W at point P in the direction of V. In other words, एक हमारे पास वेक्टर फील्ड गिवन है, हमने एक पॉइंट चूज किया P,
हम एक ख़ास डायरेक्शन में ये देखना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर फील्ड है उसमें क्या चेंज आ रही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस चेंज है। और इन अदर वर्ड्स, आप पॉइंट P के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ से हम एक ख़ास डायरेक्शन में देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमें ये जो एरोज़ हैं ये कैसे नज़र आ रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। सो वी आर नॉट मूविंग, वी आर जस्ट स्टैंडिंग एट द पॉइंट P एंड वी आर जस्ट लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, और फिर हम ये देख रहे हैं कि एरोज़ कैसे चेंज हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। नाउ देयर इज़ वन इशू, अगर वेक्टर फील्ड गिवन हो तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं R3 के हर एक पॉइंट के ऊपर और हर एक डायरेक्शन में ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो देयर शुड बी अ सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। सो उसके लिए हम देखते हैं यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। सो नेबुला W in the direction of V, इसको हम लिख सकते हैं V of Wi Ui of P. Now what is V of Wi? So सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वेक्टर फील्ड W given है as Wi Ui, हमने पहले भी देखा था, these Wi's are functions from R3 to R. और अगर ये functions है from R3 to R, these are real valued functions on R3, then we can calculate the directional derivatives of these Wi's. So अगर हम इनका directional derivative calculate करें in the direction of V, तो हमारे पास ये expression है V of Wi or the directional derivative of Wi in the direction of V at point P. और Ui of P ये हमें पता है, this is natural frame field. Let me remind you कि अगर किसी भी एक पॉइंट P पे हम स्टैंड कर रहे हैं, what is natural frame field? It is a frame field which will give me a unit vector at point P parallel to x-axis, and u2 of P is a unit vector at point P in the direction of y-axis, and similarly u3 of P is a unit vector at point P in the direction of z. So हम किसी भी पॉइंट P पे और किसी भी डायरेक्शन V में, let's say this is the direction V, then we want to calculate the derivative of this vector field in the direction of V at point P. So this brown line is the line P plus TV, a line passing through point P and parallel to the vector V. Now let's see, हमारे पास एक vector field है W, there are arrows everywhere, so corresponding to each and every point there is a vector, and similarly line के भी हर point पे, and this is the vector field W. So this statement says that the rate of change of W at point P in the direction of V can also be written as the directional derivative of each and every component into Ui. So let's see how to prove this. So starting from the definition, we know that nebula WV is basically WP plus TV prime 0. Now what is W? W is Wi Ui, and we want to calculate this vector field at the points of this line. So let's first calculate W of P plus TV, and इसका क्या मतलब है? We want to calculate the values of each and every Wi at P plus TV. So I is 1 to 3 because we are in R3, and Ui of
P plus TV. Now this is basically the precise definition, लेकिन हम यहाँ में इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, because this is understood के we are standing at the point P plus TV, an arbitrary point of the line. So we can write it down as Wi P plus TV, I is 1 to 3, and Ui. Now this is W of P plus TV. Now what is W of P plus TV prime? So we are differentiating the vector field, and we have seen that how to differentiate a vector field. We basically take derivatives of each and every component, and now this component is a function of t only, so we take derivative with respect to t and ui. Now if we remember the definition of the directional derivative, so W1, let's just consider W1, it's a function from R3 to R, and the directional derivative of this W1 in the direction of V at point P, this is basically d W1 P plus TV by T, and at point T is equal to 0. So that's the definition of the directional derivative. Or so by this definition we can easily see that so this implies W P plus TV prime is equal to dwi P plus TV by dt, I is varies from 1 to 3, ui at point t is equal to 0. Now when we take t is equal to 0, then we will take t is equal to 0 for each and every expression. So basically we will take t is equal to 0 in each and every of this expression. और अगर हम t is equal to 0 ले लें expression में, then by this definition of directional derivative आपके पास, by this definition आपके पास ये directional derivative बन जाएगा wi का in the direction of v at point p, so which is exactly the statement. So that's how we calculate in a simple way. अगर एक वेक्टर फील्ड हमारे पास गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है जिस डायरेक्शन में हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो बेसिकली हमने डिफाइन कर दिया है कोवेरिएंट डेरिवेटिव को in terms of the directional derivative, which is an important thing. And why this is important? Because we understand directional derivative, we know there are many properties of directional derivative, and we can use those properties to simplify the calculations of the covariant derivative. So some properties of the covariant derivative, let's say u and w be tangent vectors to R3 at point P, and y and z be vector fields on R3. Then for numbers a, b and functions f, then we can write down the following properties. So nebula AV plus BW of y is the same as A into nebula VY plus B into nebula YW. So basically we can calculate the covariant derivative of a vector field at a point P in the direction of A, V plus BW, and this is just this combination, A into this expression, B into this expression. So this is very important because if you have a vector V and a vector W, and if we take a linear combination of V and W, or in other words there is some vector A, V plus BW, then if we just understand
if we just understand two expressions, and what are the two expressions? That nebula YV and nebula YW. If we just understand these two expressions, then we can calculate the covariant derivative in the direction AV plus BW, which is basically a linear combination of V and W. So any vector in the plane. So basically it is any vector in the plane. ये just कोई भी linear combination ले लें. So this is another linear combination, A prime V plus B prime W. And similarly, any vector in the plane can be written as a linear combination of V and W. So V and W are non-collinear. Then any vector in plane can be written as a linear combination of these two vectors, and we just need to calculate these two expressions. And after that, we can calculate the covariant derivative of the vector field in any direction by just taking the linear combination of these two quantities. And A and B are the same as these A or B's. So this is an important consequence by using the properties of the directional derivatives. And similarly, other properties are important in calculating the covariant derivative. So let's try to prove the first property. So what is nebula Y AV plus BW? So we have seen that by this corollary, which basically related the covariant derivative and the directional derivative. So this is equal to, so basically the directional derivative of yi in the direction of AV plus BW and ui, and where y is basically yi ui. So we have seen that, so this is just a recall. So AV plus BW of some real valued function, so the directional derivative in the direction of AV plus BW is the same as A, the directional derivative of yi in the direction of V, plus B, the directional derivative of yi in the direction of W. So by using this property, we can say that so the expression 1 becomes, so nebula of y AV plus BW, this is equal to sum A V yi plus B W yi into ui. So this can be easily written as V yi ui plus B W yi ui. So this is equal to A. Now what is this expression? So this expression is basically, by using the same lemma, this is basically the covariant derivative of y in the direction of V at point P. So this is nebula y at V plus B into nebula y at W. So if we know this corresponding to these two vectors V and W, if we know these two numbers, then we can calculate the covariant derivative in any direction which is a linear combination of V and W. And if V and W, if we take them to be non-collinear, so they will span the whole plane, and then we can calculate the covariant derivative in any direction in that plane. So this is an important property. Similarly, we can prove the other properties, and we will be using the properties of the directional derivatives. So for example, how to prove the second property? So by definition, once again, AY plus BZ, so this is equal to, so let's say Y is yi
ui, and z is basically zi ui. Then this is basically nebula v a yi ui plus b zi ui, and which is equal to nebula v a yi plus b zi with ui and the summation sign. So this is equal to, by definition, so this is basically sum the directional derivative of a yi plus b zi in the direction of v ui. So this is, once again we are using the lemma, and this is equal to, so this is the another property of the directional derivative, that so this is a recall. So v, the directional derivative of a yi plus b zi in the direction of v is basically equal to a, the directional derivative of y in the direction of v, plus b into directional derivative of zi in the direction of v. So this is just basically a, so after some computation you can see that this is just equal to ui plus b, the directional derivative of zi in the direction of v ui, and so this is just equal to a nebula y in the direction of v plus b nebula z in the direction of v. So the second property is proved, and once again we use the properties of the directional derivatives to gain this property. And similarly we can prove the third property, and I am leaving this as an exercise, and also the fourth property I'm also leaving this as an exercise. So as a hint I can say that a proof is given in the book, so you can see, so this is just a hint to understand the proof. Proof is given in book. So जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है उनका प्रूफ नहीं गिवन. थर्ड पार्ट सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हैं, और जो फोर्थ पार्ट है इसका प्रूफ बुक में गिवन है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन एनी डायरेक्शन. नाउ अगर मैं एक ऐसा वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दूं जो कि मुझे वो तमाम की तमाम डायरेक्शंस दें. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने जो वेक्टर फील्ड W है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, और बेसिकली हम एक स्पेस में हैं. सो इस स्पेस में मैं हर पॉइंट पे एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, और इन अदर वर्ड्स किसी भी पॉइंट, ये लेट्स से मेरे पास पॉइंट्स हैं स्पेस के P1, P2, P3. So corresponding to every point, so just मैंने 4 पॉइंट्स चूज कर दिए. So corresponding to every point and in any direction I want to calculate the covariant derivative. So what does it mean? हर पॉइंट पे मुझे covariant derivative चाहिए in some direction. सो हर पॉइंट पे मेरे पास एक वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या बता रहा है? इस वेक्टर मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैंने कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. बाय डेफिनेशन दिस इज इटसेल्फ अनदर वेक्टर फील्ड, और ये कौन सा वेक्टर फील्ड है? जो मुझे डायरेक्शंस बता रहा है हर पॉइंट पे कि किस डायरेक्शन में आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. सो इट्स ए वेक्टर फील्ड इटसेल्फ. सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास कोई से दो वेक्टर फील्ड्स हैं और अगर मैंने W का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू V, तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा?
W का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट. इन व्हाट डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ V of P1, लेट्स से एट P1, और P2 पे V of P2. क्योंकि V is a vector field, तो it will give me a vector at each and every point of the space. So similarly P3 में मैं फाइंड आउट करूंगा किस डायरेक्शन में? V of P3. P4 पे मैंने W का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, बट इन व्हाट डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ V of P4. सो एक वेक्टर फील्ड हमें डायरेक्शंस बता रहा है कि किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, और दूसरा वेक्टर फील्ड हमें बता रहा है कि किस वेक्टर फील्ड का हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है. देन नाउ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव nebula WV. Now in this case capital W is a vector field and capital V is a vector field. Of W with respect to V is a vector field defined by this. Now we also know that what is covariant derivative at any point in any direction. It is a tangent vector. ये itself एक tangent vector दे रहा है. और अगर मैं W which is a vector field उसका covariant derivative calculate करूं in the directions given by the vector field V, it will give me another vector field and we call it, let's say, the covariant derivative vector field. So the covariant derivative vector field is a vector field which will give me nebula V of PW, which is the covariant derivative of W in the direction of V and P at each and every point of the space. Now this is this corollary is very easy consequence of the theorem, and I'm leaving this as an exercise, the proof of this corollary. This is basically giving me the vector field of the covariant derivatives of W with respect to the vector field V, which is given in this way. So if I want to calculate its value at any point P, then just मैं यहाँ पे V of P कर दूंगा तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव लूंगा Wi का इन द डायरेक्शन ऑफ V of P और Ui of P आ जाएगा. So let's calculate the directional derivatives of W in the direction of the vector field V. So let's say मेरे पास W ये वेक्टर फील्ड गिवन है और V जो है एक और वेक्टर फील्ड है जो मुझे डायरेक्शंस देगा कि किस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और इन अदर वर्ड्स किस डायरेक्शन में मैंने कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ W फाइंड आउट करना है. Then basically by using this corollary, so by using this corollary, this is just V of Wi. So what is the W1? So this is X, Y, U1 plus V of the coefficient of U2 in W is 0. So there is no term plus V of e raised to power z and u3. So this is by this corollary nebula W capital V, which is the directional derivative vector field, or in other words which is giving me the directional derivatives of W in the direction of the vector field V. And we know that how to calculate V of xy. So let's just consider V of xy. So we know that what is V. So V is just z u1 plus x minus y u2, और इसको हमने इवेल्युएट करना है at xy. So xy पे इवेल्युएट करेंगे, then it will be evaluated at z u1 of xy plus x minus y u2 of xy. So इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें x minus y को इनके ऊपर. And now what is u1 of xy? So u1 of xy is basically
So basically what is this? We are basically calculating the directional derivative of xy with respect to this vector field. So u1 is a vector field. It will give me a unit vector at each and every point parallel to x-axis, and if I want to calculate the directional derivative of xy with respect to this vector field, so ये चीज़ हमने already की हुई है. This is just equal to partial x y by partial x. So with respect to x आप लेंगे because this is 1. Similarly अगर ये 2 है तो with respect to y derivative लेंगे, और with respect to x derivative क्या बनेगा जी? This is just y, तो यहाँ पे हमारे पास y आ गया. With respect to y अगर derivative लेंगे x y का तो x आ जाएगा, और ये हमारे पास x आ गया, और बाकी चीज़ें as it is. Similarly we can calculate v of e raised to power z, and after that इन तमाम वैल्यूज़ को आप इधर पुट कर दें. v of x y, v of e raised to power z, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. एंड दिस इज़ बेसिकली a वेक्टर फील्ड. आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो ए फंक्शन with a coefficient u1 और u2 और u3 के जो coefficients है वो 0 हैं. So this is an other vector field which is the vector field of the covariant derivatives of w in the directions given by the vector field v. So there are many questions in the exercise, so it's a relatively difficult concept to grasp. So मैं ये advise करूँगा आपको कि आप exercises के questions करें. Assignment में भी questions होंगे इससे related, तो इन तमाम को आप अच्छे तरीके से try करें. Then you will be able to understand this in a more good way. And then we have this corollary, which are some other properties of this covariant derivative, and these are easy to prove, and I am once again leaving this as an exercise because they are very easy to prove, and just use the properties of use properties which we have already done of let's say directional derivative and other properties जो कि हमने की हैं. So what we have learned today? So first we learned that what is a cylindrical helix and how the Frenet operators can be used to exactly give a equivalent characterization which is easy to remember and which is easy to compute. So कोई भी curve given हो, आप tau और kappa calculate करें, and then you can say exactly if it's a cylindrical helix or not. And then we calculated the covariant derivatives, and we have seen that one of the important applications, how we can understand the weather if we understand what is covariant derivative, and then we calculated some easy ways of the calculations and some properties which are basically given by the properties of the directional derivatives, because we can relate the directional derivative and the covariant derivatives. And then at the end we defined a vector field which is given by the covariant derivative of a vector field w in the directions given by the vector field v. Next time we will be studying frame fields. This is the end of the lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.